हेलो फ्रेंड्स मु रंजीत इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी रो ये हला पार्ट नंबर 4 वीडियोटी मैराथन वीडियोटी कंप्लीट देखिया को चेष्टा करंतु एवं प्रैक्टिस करंतु बार बार प्रैक्टिस करंतु कारण बार बार प्रैक्टिस कले आपनकर सब केते बेले मन रही जीवो आपण निजे भी जानि परिबेनी और लैक ऑफ प्रैक्टिस पई कोन हुए जतले आपण एग्जाम देवा को जानती जतले जो क्वेश्चंस रो आंसर रे आपण कंफ्यूज होंती सेटा होची लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो चलते डेर नगर स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम इन इंडिया? करेक्ट आंसर हम 6टा स्टेट। ठीक अच्छे 6टा स्टेट। तो क्वेश्चन आसी पारे केतेटा स्टेट यूनिकैमरल तो मन रखिथिबे 22टा ताहले ऑपोजिट। Which of the following articles of the Indian Constitution prohibits the legislature to make retrospective criminal laws? Correct answer of Article 20. Who was the constitutional advisor of the Constituent Assembly of India? ये थिले। तो करेक्ट आंसर हम B.N. राव। B.N. राव जो माने यार पूर्व वीडियो गुडी को देखि नांती देखि पारंती मॉक देला परी किंबा रिवीजन कला बली ये वीडियो गुडी को देखिबे निश्चित आपन को काम रे आसीबो। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी डैश ईयर। तो करेक्ट आंसर हो 2 इयर्स। ठीक अछि 2 इयर्स। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the office of the Advocate General of the state? को आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 165। आर्टिकल 165। Which schedule of the Indian Constitution has 3 lists named Union List, State List and Concurrent List? तो करेक्ट आंसर होगा 7th schedule रे मेंशन करा जायछि 7th schedule रे। अच्छा concurrent list केउ देशरु बोरो करा जायछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि जणाबे। The National Institution for Transforming India नीति आयोग was formed on केबे फॉर्मेशन हितला यार 1st January 2015 रे। Which one of the following articles of the Indian Constitution deals with the Contingency Fund of India? Contingency Fund of India या रिलेटेड को आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि। अच्छा मु गोटे वीडियो करछि जोडा कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन रे थिबा सब आर्टिकल कवर करा जायछि जेतिकि भी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अछि ए वीडियो रे आपण पाइबे। आता विषय टिके टिके हिंट्स भी देई सारिछि जोडा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव रु जेतिकि दरकार जो माने देखि ना देखि परिबे पॉलिटी प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि। तार करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 267 कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। To which among the following authorities does National Commission for Backward Classes submit its annual report? Correct answer was President of India. Which of the following constitutional amendment acts reduce the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and state legislative assembly elections? ये क्वेश्चन बार बार आपण देखुते मोर प्राय वीडियो रे कारण यही क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम रे रिपीट हुए यही क्वेश्चन ही। तो यार करेक्ट आंसर हम 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक अच्छे केबे आस्तिला 1989 रे। ठीक अच्छे। Which among the following union territories has its own legislature? Correct answer about National Capital Territory of Delhi. The state chief information commissioner is appointed by correct answer about governor of the state। Governor of the state। Which schedule of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories? Allocation of seats 4th schedule। Who among the following is the ex officio chancellor of the state universities? One and only governor of that state। सब स्टेट रो चांसलर गवर्नर ही रुहंती सब यूनिवर्सिटी रो। The Central Public Service Commission was set up in the year Central Public Service Commission 1926 रे।
The part 4A of the Indian Constitution deals with एथिरे हमरो कोन मेंशन करा जायछि फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छा हमरो सब जाक पार्ट्स को नेकी मध्ये मो वीडियो करछि पार्ट्स विषय रे मध्ये की पॉइंट गुडी को डिस्क्राइब करके गोटे वीडियो करछि सेटा मध्ये आपण पॉलिटी प्लेलिस्ट रे पाई जिवे हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा का बाके पावर अछि तो करेक्ट आंसर वा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी recommended for the inclusion of fundamental duties in the Indian Constitution? So here correct answer of Swarn Singh Committee. Swarn Singh Committee, most important question. In India, the Council of Ministers are collectively responsible to dash. Council of Ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. ठीक अछि Lok Sabha. Dash is the total value of all final goods and services that the economy produces during a given year, accounting for inflation. Dash is the total value of all final goods and services that the economy produces during a given year, accounting for inflation. Real GDP, nominal GDP, potential GDP, GDP per capita. The correct answer about real GDP, that is real GDP. The National Human Rights Commission of Commission of India is not empowered to inquire into any matter after the expiry of dash from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed. The National Human Rights Commission of India is not empowered to inquire into any matter after the expiry of dash from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed. 1 year. That is 1 year. The minimum support prices MSP are announced by the government of India at the beginning of the sowing season of certain crops on the basis of the recommendation of the dash. Correct answer will be Commission for Agricultural Costs and Prices. All India Trade Union Congress AITUC was started in the year. को वर्ष स्टार्ट हैला तार करेक्ट आंसर अब 1920 रे 1920 रे. Which of the following articles of the Indian Constitution directs the state to protect monuments of national importance? One kind of fundamental duties. Article 49. Article 49. ठीक अछि. Next. In India, the upper house of the state legislature is also called the upper house of the state legislature is also called ताको कौन कहा जाए तो करेक्ट आंसर अब विधान परिषद अपर हाउस को विधान परिषद ठीक अछि. नेक्स्ट. Who among the following has the authority to remove the election commissioner of India? Election commissioner of India को केवल प्रेसिडेंट हटे परिवे. Which house is a permanent house of the Indian Parliament? Permanent house कोटा राज्य सभा. Which article of the Indian Constitution contains provisions regarding freedom to manage religious affairs? Freedom to manage religious affairs. तार करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 26. आर्टिकल 26 मु ऑलरेडी आउथर कहया चाहूची आर्टिकल्स रिगार्डिंग वीडियो करि साची जो माने देखि नांती देखि नियंतु थरे आईडिया आसी जीवो को आर्टिकल ले कोन हुए. What is the maximum possible strength of the legislative assembly of a state in India? Maximum possible strength केते legislative assembly रो तो करेक्ट आंसर हो 500 seats. 500 seats ठीक अछि. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the right to freedom of speech and expression? Right to freedom of speech and expression. The correct answer is Article 19. Right to freedom of speech and expression. The constitutional amendment that inserted the anti-defection law into the Indian Constitution is. The constitutional amendment that inserted the anti-defection law into the Indian Constitution is.
करेक्ट आंसर हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों शेड्यूल मेंशन अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे क्यों शेड्यूल रे At present, how many states have unicameral legislature system in India? Starting to koi sathili 22. Who was the chief architect of the Constitution of India? One and only B.R. Ambedkar. Which article of the Indian Constitution provides for the establishment of an interstate council? को article mention करा जाइछि establishment of an interstate council the correct answer will be article 263 article 263 interstate council who among the following founded the Swadesh Bandhav Samiti to propagate the Swadeshi movement who among the following founded the Swadesh Bandhav Samiti to propagate the Swadeshi movement the correct answer is option C Ashwini Kumar Datta ठीक अछि In economic terms, the total market value of all final goods and services produced in a country in a given year is known as. In economic terms, the total market value of all final goods and services services produced in a country in a given year is known as GDP. Option D. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the right to assemble peacefully? Right to assemble peacefully. Ko article mention अछि? Article 19. Freedom of speech. Under which article of the Indian Constitution Consolidated Fund of India was constituted? Ko article mention अछि? Article 266 re. Article 266. The part 4 of the Indian Constitutions deals with part 4 रे कोन मेंशन अछि DPSP कोन DPSP who is the highest law officer of a state the correct answer Advocate General of the state who has the authority to establish a joint state public service commission for 2 or more states on the request of the concerned state legislatures का बाके से अथॉरिटी अछि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो एस्टैब्लिश करि परिबो गोटे किबा दीटा गोटे रो तो ऑब्वियसली होबो दी तीनटा स्टेट रू मिसेगी तो करेक्ट आंसर हो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिले प्रॉब्लम दबो ए क्वेश्चन प्रिसाइजली मन रखिबे व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पई मिनिमम एज केते दरकार 35 द वाइस प्रेसिडेंट may resign his office by submitting his resignation to the kaha ku dei paribe president in India the cabinet committees are set up by the cabinet committee kaha dwara set up hue the correct answer hochi prime minister of India the institutions of speaker and deputy speaker originated in India in the year ko varsha the institutions of speaker and deputy speakers originated in India in the year correct answer hochi 1921 who has the power to prorogue either house of the Indian parliament कौन हो यार आंसर the correct answer was president of India ठीक अछि next who among the following holds the contingency fund of India on behalf of the president of India का बाकी से authority अछि hold करिवार on the behalf of the president of India the correct answer was union finance secretary ठीक अछि हमरो बतन फाइनेंस सेक्रेटरी किए अछंती कमेंट करिवे आर्टिकल 263 of the Indian Constitution deals with 263 रे कोन मेंशन करा जाय छी interstate council which of the following
groups has launched a plan named Global Shield at the 27th UN Climate Change Conference? तो करेक्ट आंसर हम G7. करेक्ट आंसर हम G7. ठीक अच्छे G7 ग्रुप. The National Commission for Protection of Child Rights was set up in the year. ये पॉलिटी रे आसुनी बट क्वेश्चन आसुची बोली मु मेंशन कर देइची. The National Commission for Protection of Child Rights was set up in the year. को वर्ष 2007 रे. Which among the following is an all India service in India? याद्रु कोटा Indian Postal Service, Indian Revenue Service, Indian Foreign Service, Indian Forest Service. याद्रु all India service कोटा. तो करेक्ट आंसर है यार Indian Forest Service. In India, the lower house of the state legislature is also called state legislature. Upper house को कौन कह जाए विधान परिषद बोली जानले. ताहले लोअर हाउस को कौन कहबा विधान सभा कहबा. The 11th schedule was inserted into the Constitution of India through which of the following constitutional amendment acts? 11th schedule को amendment रे 73rd amendment act रे. अच्छा जेतिकी भी amendment act important amendment act ताकू नेकी मध्य वीडियो करछि जो मान देखि नांती देखि नियंतु. मोस्टली सेथुरी क्वेश्चंस आपन को देखिया को मिले. Who appoints the governor of the state in India? की अपॉइंट करंती. तो करेक्ट आंसर हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बहुत इजी क्वेश्चन है गला. आर्टिकल 371A of the Indian Constitution contains special provision with respect to the state of. Article 371A of the Indian Constitution contains special provision with respect to the state of Gujarat, Mizoram, Nagaland, Andhra Pradesh. तो करेक्ट आंसर हो Nagaland. करेक्ट आंसर हो Nagaland. The original text of the Indian Constitution contains dash schedule. तो करेक्ट आंसर हम स्टार्टिंग रो 8टा दिला पर 4टा ऐड हला. At present how many union territories are there in India? बतन केतटा यूनियन टेरिटरी अछि? 8टा 28टा स्टेट 8टा यूनियन टेरिटरी. Who among the following presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India in 1946? एबे भी बहुत जण मु कहूनी जे स्टूडेंट्स बोली माने लोक बाक कथा कहूजी तांको पचारे बतन केतरा स्टेट से माने 30टा 29टा कहबे ट्राई करिवे. Who among the following presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India in 1946? तारा करेक्ट आंसर होची सचिदानंद सिन्हा. करेक्ट आंसर होची सचिदानंद सिन्हा. Who called the preamble as the identity card of the Indian Constitution? किए कहिथिले preamble as the identity card? तारा करेक्ट आंसर होची N.A. पालखीवाला. N.A. पालखीवाला. ठीक अछि. Next. Who among the following has the power to remove the Chief Information Commissioner of India? तो करेक्ट आंसर हवा President of India. Which article of Part 3 of the Indian Constitution deals with the right to form cooperative societies? Right to form cooperative societies. वो आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 रे आपण आज तीनटा जिंस सुनले एही वीडियो रे मने रखिथिबे. The National Commission for Scheduled Caste presents its annual report to the कहा को दिए. तो करेक्ट आंसर हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाए. Which party was ruling Britain at the time of India independence? इंडिया इंडिपेंडेंस टाइम रे ब्रिटेन रे रूलिंग पार्टी कौन थिला? तार करेक्ट आंसर होची लेबर पार्टी. दैट इज लेबर पार्टी. Who was the first education minister of independent India? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर समस्त जानथिबे मौलाना अबुल कलाम आजाद. मौलाना अबुल कलाम आजाद. ठीक अच्छे. आंको बर्थ एनिवर्सरी को आमे केउ डे भाव रे ऑब्जर्व करूचे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेबे. मौलाना अबुल कलाम आजाद करो. Which article of the Indian Constitution prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or other hazardous activities?
14 वर्ष रु कम पिला को कौन सी फैक्ट्री माइन और हाजर्डस एक्टिविटीज रे काम रे न लगेया पई प्रोहिबिट करूची हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल रे मेंशन अछि ऑप्शंस भलो अछि कंफ्यूजिंग यार करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंटरनेशनल कन्वेनेंट on civil and political rights? How many articles are there in the international covenant on civil and political rights? Correct answer 53 articles. Who among the following acts as a protector and guarantor of fundamental rights in India? Yeah, protector and guarantor fundamental rights ro. Supreme Court of India. Supreme Court of India. Which among the following veto powers is not vested upon the President of India? वो veto power president पाखरे नहीं. The correct answer होगा qualified veto. Qualified veto. The pro tem speaker of the Lok Sabha is appointed by the President of India. Which among the following comes under the primary sector of Indian economy? Fishing, transportation of goods, textile industry, banking. Primary sector under कोटा आसुची fishing. Which of the following articles of the Indian Constitution directs the state to separate the judiciary from executive in public services? To separate the judiciary from executive in public services. Correct answer होची आर्टिकल 50. देखो बहुत गुड़े क्वेश्चन आप रिपीट पाउथुवे ता सहित किछि नुआ नुआ मध्य पाउथुवे तो यार करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 50. नेक्स्ट द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन वाज सेट अप एज statutory body in the year. National Commission for Women was set up as statutory body in the year 1992. Who among the following has the authority to establish interstate council under Article 263 of the Indian Constitution? Correct answer, President of India. The 12th schedule was inserted into the Constitution of India through which of the following Constitutional Amendment Act? 12 number schedule क्यों amendment द्वारा insert करा गला? 74th Constitutional Amendment Act. Which one among the following reads literally means to have a body of? To have a body of. Habeas corpus. Habeas corpus. Which among the following terms is not a part of the preamble of the original Constitution of India enacted in November 26, 1949? या भितर कोडा पार्ट नथिला. Justice, fraternity, integrity, republic. तारा करेक्ट आंसर होची integrity. Sorry. Which among the following terms is not a part of preamble? Of the original Constitution of India enacted in November 26. ठीक अच्छे इंटीग्रिटी जस्टिस फ्रेटर्निटी इंटीग्रिटी रिपब्लिक मुझे कंफ्यूज है क्वेश्चन रे जस्टिस फ्रेटर्निटी इंटीग्रिटी रिपब्लिक रिपब्लिक हवा कथा ना जस्टिस फ्रेटर्निटी इंटीग्रिटी तो अच्छी बट सेटा तो अमेंडमेंट रे सेटला व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रीएम्बल इंटीग्रिटी ठीक अच्छी
कारण आमर पर ऐड करागला सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी नुआ वर्ड जोटा कि इनसर्ट करागला ताले इंटीग्रिटी कोड आसला ठीक अच्छे है बुझीगला आमर सोशलिस्ट ऐड करागला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे जोटा कि 1976 होता सोशलिस्ट आउ हला सेक्युलर इंटीग्रिटी ए तीन टाक ऐड करा जायतिला बट 1949 बेलू तो इंटीग्रिटी नथिला तो यार करेक्ट आंसर हम इंटीग्रिटी ठीक अच्छे मुझे कन्फ्यूज हो जाइए एक्चुअली नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुझे भूल कहली जदि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कौन रिपोर्ट पब्लिश करे तो करेक्ट आंसर होची ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स क्यों शेड्यूल रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोवाइड्स माने मेंशन करा जायछि फॉर ए थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स तार करेक्ट आंसर हबो 7th schedule करेक्ट आंसर हबो 7th schedule in India the nota option is permitted in which of the following election यार करेक्ट आंसर हम लोकसभा इलेक्शन ए जरे नोटा कौन नोटार फुल फॉर्म कौन नोटार फुल फॉर्म होची नॉन ऑफ द एबव कौन नॉन ऑफ द एबव नोटा ऑप्शन इज परमिटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन परमिटेड होची लोकसभा इलेक्शन रे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा अच्छा नोटा या विषय क्यों आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे तो मुझे कहि दउछि 326 आर्टिकल 326 रे मेंशन करा जायछि क्लियर फर्स्ट टाइम यूज के बेहला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणेबे फर्स्ट टाइम के बे यूज हेतिला नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटी आसीछि यूएसएसआर रू फंडामेंटल राइट्स आसीछि यूएसए रू sorry at present how many cabinet committees are functional in India केतरा कैबिनेट कमिटी अछि वर्तमान सुधा तो करेक्ट आंसर हबो 8टा द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज ताको कोन कहबा लोअर हाउस को लोकसभा कहबा व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पई 35 दरकार प्रेसिडेंट पई मध्ये 35 दरकार ठीक अछि और राज्यसभा एमपी ता पई दरकार 30 मन रहला क्लियर पंचायत इलेक्शन लड़िया 21 वर्ष दरकार 25 वर्षटा कौन पाई दरकार एमएलए पाई जो लड़ा जाए ठीक अच्छे सरीगला 30 25 35 21 जानीगले मिनिमम भोट एज हो 18 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज वो आर्टिकल मेंशन करा जायछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज तार करेक्ट आंसर होछि आर्टिकल 312 312 व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द इमरजेंसी प्रोविजंस को पार्ट रे मेंशन करा जायछि इमरजेंसी प्रोविजंस विषय रे तो करेक्ट आंसर हबो पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंटरी कमिटीज हैज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम राज्य सभा को पार्लियामेंटरी कमिटी रे हैज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम राज्य सभा तार करेक्ट आंसर हबो एस्टिमेट्स कमिटी हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC केतरा आर्टिकल अछि UNCRC रे इन इंडियन पॉलिटी रो क्वेश्चन नुह बट क्वेश्चन देखिया को मिले तार करेक्ट आंसर होछि 54 आर्टिकल्स अछि ठीक हला नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यंगेस्ट होचंती प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इंदिरा गांधी तो नुह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हु among the following has the right
to speak and take part in the proceedings of both the houses of a Parliament of India? Who among the following has the right to speak and take part in the proceeding of both the houses of the Parliament in India? The correct answer is Attorney General of India. Who among the following has the power to constitute a finance commission under Article 280 of the Indian Constitution? का पाखरे से power अछि to constitute a finance commission under Article 280? The correct answer is President of India. ठीक अछि. At present, how many All India services are there in India? बर्तमान सुधा केतेटा All India services अछि? तो correct answer is 3टा. Which among the following has been empowered to conduct inspection of stock exchange in India? काहाकु से power दिया जिछि? The correct answer is SEBI, Securities and Exchange Board of India. The concept of equal protection of law in the Indian Constitution has been taken from equal protection of law. The correct answer is American Constitution. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the Attorney General of India? को article mention करा जाइए Attorney General of India विषय रे? Attorney General of India. The correct answer is Article 76. Article 76. At present, the Election Commission of India is a dash member body. केतरा member अछंती Election Commission रे आम इंडिया रे? The correct answer is 13टा. केतरा? Sorry, 13टा कहूची. कोन? 3 member Election Commission of India रे. ठीक अछि. Chief Election Commissioner आ बाकी तांको सहित दीटा. Next, what is the full form of IMPS in payment transaction? IMPS the full form kono? Immediate payment service. Immediate payment service. Who is the chairman of Financial Stability and Development Council in India? Chairman के FSDC रो. The correct answer is Union Finance Minister. Union Finance Minister. The chairperson of State Human Rights Commission is appointed by the कहा द्वारा appoint हुआ chairperson of the State Human Rights Commission? The correct answer is governor of that state. Governor of that state. The Committee on Public Accounts is the oldest parliamentary committee in India and was first constituted in the year. The Committee on Public Accounts is the oldest parliamentary committee in India and was first constituted in the year 1921. The word democracy has its origin in the dash language. Origin कोठी डेमोक्रेसी रो. तो करेक्ट आंसर होची origin language होची ग्रीक. Origin language होची ग्रीक. ये थिला 100 क्वेश्चंस. केमती लागला कोन लागला वीडियोज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निजर प्रतिक्रिया रिव्यू निश्चित जणाइबे. आ वीडियो टी कंप्लीट देखिथिबारु धन्यवाद.